तो आज आम देखा लूप आम यूज करथिले से लूप रे केमती कंट्रोल दबा कहीं ना लूप बेसिकली आम कहीं यूज करू कौन सी गोटे काम को बारंबार करबा पई राइट समथिंग व्हिच वी वांट टू do multiple times, right? So every loop has some kind of items list or some kind of iterations list will be given. Based on that, the loop will work. जदि हमें 10 थर लूप कंट्रोल करिवार अछि बा अंटिल गोटे कंडीशन दबा से कंडीशन जते पर्यंत मेट हेनी सेते पर्यंत हमर लूप चलिबो राइट तो से लूप को हमें केमती कंट्रोल करिवा the two ways that we can control the loop. One is the using break statement and the other one is using the continue statement. Okay. So basically हम तुमको बहुत लिमिटेड वे रे कंप्लीट डिटेल्स रे तुमको बुझे दोची केमती हमें यूज करिब तारे बेसिक किसी थियोरेटिकल नाही जस्ट जानिबो केमती कोन यूज होची तापर हमें छोटो छोटो प्रोजेक्ट छोटो छोटो प्रोग्राम कले जानि परियो तमे कंप्लीटली तमे केमती हमें एटा को यूज करिबा राइट तो दुईटा स्टेटमेंट हमें यूज करिबा लूप कंट्रोल ले गोटे हला ब्रेक स्टेटमेंट आ गोटे हला कंटिन्यू स्टेटमेंट राइट ब्रेक स्टेटमेंट आउ कंटिन्यू तो ब्रेक कोठी लगेबा जोठी हम किछि गोटे हमर जो लूप ता यूज होछ से लूप को ब्रेक करिबा माने धरो हमर 10 टाइम्स गोटे धरो गोटे कंडीशंस थिबा हमर 10 टाइम्स सर्च करिबा पई 10 टाइम्स सर्च करे जदी से पर्टिकुलर आइटम ता फाइंड हैला माने पाइला देन हमर लूप ता कोन ब्रेक हे जिवो त हम हेटी कोन ब्रेक स्टेटमेंट करिबा तब आउ गोटे गोटे टाइम रे यूज कोन करिबा ना जोठी से जो कंडीशंस ता मेटला से कंडीशंस से पाइला परे हमें कोन करिबा ना ताको आउ थरे कंटिन्यू करिबा तो कंप्लीट ताको जदी हमें कंप्लीट वे रे देखिबा how we can use the break statement and where we can use the continue statement. So ता भीतर रहउची गुटे infinite loop. तो infinite loop जाने माने कोन जो loop टा की infinitively right infinite where infinite run habo माने there is no end right so all the loops have limited life they come out once the condition is false or true depending on the loop basically कोन होछ ने सब loop रो गोटे limited life था based on the conditions we set up right जो condition हम सेट करते ता condition met हे गेल loop end हे जिवो but infinite रे कोन होछ ना गोटे गोटे टाइम रे कोन होछ ना तमे कंटीन्यूअसली तमे कोन हो ना loop को रन करिवार तमर अछि राइट देन कोन हो ना से केस रे तमर कोन हो ना किछि कंडीशन दबो जो कंडीशन की केबे भी false habani right a loop may continue forever if the required condition is not met a loop that executes forever without terminating executes for an infinite number of times okay तो जोटा infinite number of times जो loop ता execute होची से को हमें infinite loop कहबा राइट तो हमें लास्ट क्लास रे देखितले while loop रे हमें गोटे कंडीशंस देइतले जे कंडीशंस हिसाब रे हमरो कोन execute हेतिला जदि से कंडीशंस केबे भी सैटिस्फाई हबनी जदि कंडीशंस केबे भी मेट हबनी देन कोन हबो हमर से लूप ता इनफाइनाइट रे चली नाउ लेट्स लुक इनटू द अदर पार्ट द ब्रेक स्टेटमेंट ओके इनफाइनाइट लूप आ ऊपर गोटे छोटो एग्जांपल हमें दबा सरला परे कंप्लीट लूप कंट्रोल स्टेटमेंट हम बुझी सारा पर तुम गोटे छोटो एग्जांपल देबी केमती इनफाइनाइट लूप हमर यूज होची right तो infinite loop चलो नेक्स्ट आछे हमर तो ब्रेक स्टेटमेंट तो ब्रेक स्टेटमेंट हम कोड यूज करिबा हमें देखियो यदि ब्रेक स्टेटमेंट कोन होछ ना कोन होछ द ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड टू टर्मिनेट द एग्जीक्यूशंस ऑफ द एंटायर लूप जो लूप ता कंटीन्यूअसली चालू छी राइट जो लूप ता कंटीन्यूअसली चालू छी हमें चाहू छी ताकू किछि टाइम रे ब्रेक करिबा पई राइट तो सेही टाइम रे हमें कोन करिबा ना गोटे कंडीशंस दे दबा जेमति केटी गोटे कंडीशंस दिया छि व्हाइल लूप भीतर गोटे कंडीशंस हम लिखि छे से कंडीशंस जदी मेट हे गला देन हमें ब्रेक कर दो छे देन हमें ब्रेक कर दो छे राइट एटी हमें कोन दले कंडीशन नो 10 टाइम्स राइट 10 टाइम्स कोन करबो द कंडीशन चेक करबो व्हाइल लूप रे ए रो वैल्यू हमें नै छे 0 इफ the value of a less than 10 then execute it while loop continue हबो कंटिन्यू हला पर जोटी आ गोटे कंडीशंस लूप भीतर हमें कंडीशन देला
जोटी कोन 5 मिली जीवो देन सेठी कोन हो ब्रेक हे जो देन इट विल ब्रेक ओके हमें स्मॉल प्रोग्राम करिवे तापर मु तुमको बते देबी केमती लेट्स गो अहेड एंड डू द स्मॉल प्रोग्राम तो मुझे देबी ओके तो लास्ट क्लास हम लूप डेमो देखितले तो आज देखिए इनफाइनाइट लूप बा इनफाइनाइट डेमो डॉट एसएच ओके तो मैं ये क्विकली लिखि दउची देन बाइट्स ओके तो जेमती हमें व्हाइल लूप यूज करथिले राइट का सेम व्हाइल लूप भी इटी यूज करबी राइट देन कोन लिखिबी फर्स्ट गोटे वेरिएबल नै गली a इक्वल टू 0 a इक्वल टू 0 देन व्हाइल हमें एठी कोन कंडीशंस दबा कंडीशन कोन होची व्हाइल डॉलर a सब्स्टिट्यूशंस करबा राइट डॉलर a रो वैल्यू टा हमें कंपेयर करबा गोटे कंडीशंस दबा if dollar a less than okay suppose 10 then हम कौन do done मागे तार सिंटैक्स टा लिखि देली while loop रो केमति करबो while conditions do and done so do भितरे do out done भितरे हमें complete command बा list of commands बा जहां भी हमर एग्जीक्यूट करिवार अछि हमें एग्जीक्यूट करिवा राइट सपोज मैं एठी प्रिंट कर देली echo डॉलर ए तो एठी के कोन करबो डॉलर ए प्रिंट करबो ओके तो डॉलर ए प्रिंट करिया भीतर त हमु कोन करिया अछि एठी जेतोला हमें फर्स्ट दउछ एठी डॉलर ए त हमें एटा एग्जीक्यूट करबा कोन हबो गाइस एठी कोन हला ए रो वैल्यू नै गेला 0 तो 0 लेस देन 10 यस प्रिंट कल तो ए जो एग्जांपल ता मु दउछि एटा तो मु को जदी कंप्लीटली सेव कर देबी सेव कर देली राइट एठी कोन हबो कि मते कहबो एठी फर्स्ट कोन अछि ए रो वैल्यू 0 अछि तो एठी मु आ किछि स्टेटमेंट लिखिनी खाली प्रिंट कली डॉलर ए माने ए रो वैल्यू टा प्रिंट करिवो जेतु हमें एठी ए रो वैल्यू 0 डिक्लेयर करिचे राइट एठी मु जदी कंपेयर करछि 0 लेस देन 10 यस 0 लेस देन 10 तापर कोन करिवो प्रिंट करिवो एको डॉलर ए सो डॉलर ए प्रिंट परे कोन होछि तापर नेक्स्ट हमर कोन एग्जीक्यूट करिवो ए लूप भितर बाहर करी पुणी आउ थरे कंपेयर चेक करिवो राइट पुणी असले 0 से 0 0 भीतर ही कंपेयर करिवो कारण हमें तार इंक्रीमेंट करोउने तार वैल्यू टा को हमें इंक्रीमेंट करोउने तो एठी कोन हबो ना एटा इनफाइनाइट लूप रे पड़ी जिवो एटा कोन हबो इनफाइनाइट लूप रे पड़ी जिवो राइट तो मु एटा सेव करूची जदि मु एटा को एग्जीक्यूट करबी देखो गला 0 प्रिंट करूची राइट constantly 0 प्रिंट करूची इनफाइनाइट लूप इट नेवर ब्रेक्स केबे भी ब्रेक होबे एंड इनफाइनाइट लूप रे तो मodi कंट्रोल सी प्रेस करबी देन इट ब्रेक कला हम फोर्सफुली तब टर्मिनेट कर देली जेतु इनफाइनाइट लूप रे पड़ी गला काई कि इनफाइनाइट लूप रे असला एटा ताकि एटी हमर कंडीशंस केबे भी मेट हबनी कारण सब बेले 0 सहित से कंपेयर करिवो राइट सब बेले 0 सहित कंपेयर करिवो तो वर्तमान होची जति मु एई पर्टिकुलर प्रोग्राम रे कोन करबी एठी ए रो वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देबी केमती ए इक्वल टू हमें कोन एक्सपीआर कमांड दबा गोटे कैलकुलेशन करियो माने +1 देकरी मु 1 इंक्रीमेंट करबी राइट तो एक्सपीआर कमांड यूज करले डॉलर ए रो वैल्यू केते हबो 0 +1 1 इंक्रीमेंट हे जो तो ए रो वैल्यू कोन हे जो वर्तमान 1 फर्स्ट प्रिंट करिवो 0 तापर ए रो वैल्यू 1 हे गेला तापर कोन ना लूप एटी के आसिला पुनी चेक कला 1 आ ऊपर को जीवनी राइट ए कंडीशन चेक करिवो 1 लेस देन 10 यस प्रिंट 1 तापर आसियो कोन 1 + 1 2 2 लेस देन 10 यस तापर कोन आसीबो 2 प्रिंट कला तापर 2 + 1 3 हे जीवो
तो 3 लेस देन राइट तो एटी कोन है हमर जिते की भी रहउची तापर जब 9 तापर 10 हे गला पर एटी कंडीशन कोन है फॉल्स हे जी कंडीशन फॉल्स हेले कोन हो हमर लूप रु आउट हे जीवो कंडीशन फॉल्स हेले हमर लूप रु आउट हे जीवो राइट तो मु एटी जदी कोन करची लाइन टा डिलीट कर दोची इंटरनेट लूप रे हमें आउ गटे एग्जांपल दबा ब्रेक स्टेटमेंट रो ओके ब्रेक स्टेटमेंट एटा हमरो कमेंट दे दोची जोटे के हमें फाइन इनफाइनाइट राइट लेट्स कीप इट हमें आउ गोटे कौन करबा आउ गोटे प्रोग्राम कर दो जोटा कि ब्रेक स्टेटमेंट ब्रेक डेमो राइट ब्रेक डेमो डॉट sh नेगली आउ गोटे सिंपल bin बास यूज करी राइट एग्जैक्टली सेम टाइप करछि एठी मु कोन कली a इक्वल टू बढ़ाई देली तो एठी हमर कोन होबो ना जदि एटा को एग्जीक्यूट करबी वर्तमान कोन होबो से हमर chmod 755 हमको कोन अप टू 0 रु 9 जाय प्रिंट करिवो राइट 0 रु 9 एठी कोन प्रिंट कला 0 रु 9 प्रिंट कला काहे कि ना 10 हैला बेलु को हमर कंडीशन सैटिस्फाई हे जाउची कंडीशन एठी मेट हे गला 10 से तो इंक्रीमेंट हे गला 10 कंडीशन सैटिस्फाई हे गला माने 10 नॉट लेस देन 10 राइट ता माने एठी आउ आसीबो एठी फॉल्स लूप हमर ब्रेक हे जिवो राइट तो आमे चाहू छे हमर जो लूप कंट्रोल टा अछि लूप को हमें किछि टाइम रे कंट्रोल करिबा तो केमती कंट्रोल करिबा ना सपोज हमर गुटे कंडीशंस दबा सही कंडीशंस भितरे जदी हमर मेट हला देन ताकू हमें ब्रेक कर दबा चाहे जदी ब्रेक करिबा देन ब्रेक करिबा केमती तो मेटी कोन करिवे जदी सिंपली जदी हमर सपोज मु 6 नंबर रे ब्रेक करिया पय चाहू छी इफ कंडीशंस मते एटी गोटे दव पड़िबो राइट इफ $a right equal to right hyphen eq equal to kete $a equal to suppose 6 then मेटी कौन कर दली ब्रेक कर दूं फी तो इफ कंडीशन टा में कोन स्टार्ट्स विथ इफ एंड विथ फी fi राइट तो हमें एठी कोन गल सिंपली गोटे कंडीशंस देकी ताकू हमें ब्रेक कर देले राइट सिंपली कंडीशंस देकी गोटे ब्रेक कर देले इफ कंडीशंस ता माने कोन होछ ना एठी एक पर्टिकुलर प्रोग्राम तमे बुझो जदी हमें एठी a रो वैल्यू बोले कोन every time we are incrementing with 1 so when a becomes 6 that time these conditions will get satisfied these conditions will be met once these conditions will be met then what will happen this will fall into this if statement block if block रे हमें कोन लिखि छे break त माने कोन हमर स्टेटमेंट एटी ब्रेक हे जिवो राइट तो से अप टू केते जाय प्रिंट करिवो गाइस के कोइ परियो केते जाय प्रिंट करियो वर्तमान 0 to 5 then 6 change sir 0 to 6 प्रिंट करी काहे कि ना देखो 6 एटी ब्रेक आगे 6 हेला परे जाय कि 6 आसीबो ना 6 कंपेयर करबाटी 6 आसला पुनी 6 एटी कंपेयर करिया पर्यंत से आगु प्रिंट कर देथियो 6 राइट 6 प्रिंट कर देथियो तापर जाय कि ब्रेक हो राइट लेट्स चेक इट देखो 0 to 6 तापर ब्रेक हे गेला राइट मु जदी सही पर्टिकुलर एको स्टेटमेंट टाकू मु एठी न रखी जदी ए रो इंक्रीमेंट परे रखिबी ए रो इंक्रीमेंट
परे रखिबी कोन हबो एको डॉलर ए रखिबी राइट डॉलर ए एठू हटे देबी तो से कोन करिवो सब बेले कोन करिवो एठी जो प्रिंट करिवो 0 रु प्रिंट करिवो ना 1 रु प्रिंट करिवो एठू प्रिंट करिवो 1 रु देखो 1 रु 6 और 0 प्रिंट हेलानी काहे कि तुम बुझी पाइलो एठी जे तुम एको डॉलर एटा प्रिंट कली कोन आफ्टर incremented by 1 then I printed the value of a that's why it printed 6 so basically तुम जोटी पर्टिकुलरली तमरा रिक्वायरमेंट हिसाब रे तुम जहां पे डिस्प्ले करे पे चाहो से हिसाब रे तुमको सही पर्टिकुलर जगह तुमको कंप्लीट प्लेसेस रे तुमको रखियो पड़िबो अदरवाइज इट विल गिव अ डिफरेंट आंसर राइट एटी डॉलर है 0 to 6 प्रिंट कला तो ब्रेक जानी पहलो तमन हमरो जे कोनसी गोटे कंडीशंस मेट हैला माने हमें लूप को ब्रेक कर देले जो लूप कंट्रोल हमें पड़छे सेटा को कंट्रोल कर देले माने ब्रेक हे गेला से लूप आउ फर्दर कंटिन्यू हबन राइट बट सेम केस रे हमें जदी चाहबा फर्दर कंटिन्यू करिबा पई राइट देन हमें कोन करिबी गोटे कंटिन्यू आ गोटे बनै दोची continue.sh okay something a equal to 0 while something dollar a hyphen less than suppose 10 एटा मु जस्ट गोटे बेसिक एग्जांपल दोची हमर जस्ट ब्रेक आउट कंटिन्यू बट हमें जो रियल प्रोग्राम करिवा राइट जेतले हम प्रोग्राम करिवा से टाइम रे हमें देखिबा केमिति एक्चुअली प्रोग्राम रे एटा काम करूची राइट डू then done echo dollar ए तो मैं एठी कंडीशंस कोटे देली इफ एठी कोन होबा ना देखो एठी गोटे बहुत इंटरेस्टिंग हम लिखिबा डॉलर ए देली इक्वल टू हाइफन eq सपोज सेम थिंग 6 देली ओके बट एठी कोन करली देन मैं प्रिंट कर देली देन कंटिन्यू p ओके तापर a रो वैल्यू ता मु बढ़ाई दोची राइट नेक्स्ट हियर डॉलर a प्लस 1 देन राइट तो एठी कोन होबो ना एठी हमें कोन करल जदी सैटिस्फाई हे गला एठी कोन करिवो कंटिन्यू करिवो ता माने लूप टा एटू लूप पुनी स्टार्ट कर दबो आउ इंक्रीमेंट करिवनी आउ इंक्रीमेंट करिवनी राइट तो हमें देखिबा चेक करिबा केमति होछ सॉरी देखो एठी भी इनफाइनाइट लूप रे पड़ गेला कि मते एक्सप्लेन करि परिबो एटा काहे कि इनफाइनाइट लूप रे पड़ला एग्जैक्टली कि मते एक्सप्लेन करि परिबो काहे कि एटा इनफाइनाइट लूप रे आसला कना कंटिन्यू अछि बेले ठीक अछि अच्छा ओके कंटिन्यू अछि बोली बट को जगह रे मते बुझाओ को टू कंटिन्यू अछि बोली से आसला जो इक्वल 6 पर ठारो कंटिन्यू अछि त देन ता पर ठारो ही 6 6 आसबो एग्जैक्टली सो एटी देखो हमें एटी कोन कले एटी इनफाइनाइट लूप रे एथि पई पडिला हमें कोन कले फर्स्ट हमर वैल्यू चेक कला जते पर्यंत 6 न होइची एर वैल्यू जते बळे एटी 5 थिल 5 प्लस 1 एतो एर वैल्यू 6 हे गला राइट एटी तो 6 हे गला 6 ता कोन करिवो एटी पुन तर लूप को आसला राइट 6 लेस देन 10 यस कंडीशन सैटिस्फाई तापर प्रिंट कला कोन 6 तापर पुनी कला इफ 6 equal to 6
yes 6 then continue तापर कंटिन्यू माने से एउटू पुणी आसीबो आउ तळुकू आसिलानी आउ लूप स्टेटमेंट हमर कोन तळुकू आसिलानी कोन आसिला कंटिन्यू कला माने लूप को हमें कंटिन्यू करिवा पय इंस्ट्रक्शन दे देले राइट एटी से कंटिन्यू कला पर वर्तमान 6 एर वैल्यू केते अछि एर वैल्यू 6 अछि तो एर वैल्यू पुणी कंपेयर कला 6 लेस देन दिस यस एटी आसला पुणी चेक कला एटी पुणी कंटिन्यू पुणी चेक कला पुणी कंटिन्यू तो बारंबार से 6 रे ही रही गला तो ये कोन ना इनफाइनाइट लूप रे हमरो पड़ी गला राइट तो हम जदी एटा को पर्टिकुलरली इनफाइनाइट लूप रु हटियार अछि तो कोन करिया आमे जदी कॉन्स्टेंटली कोन करिवा एटा को जदी हम हटेगिरी आनी के पुट कर दवा कंडीशंस पूर्वरु काम करिवो राइट तो मु कोन करछि ना एठी ओके तो एठी एटा को ए लाइन टा को मु डिलीट कर दोछि तो एठी कोन कली मु प्रिंट करूछि इमीडिएटली तर इंक्रीमेंट करूछि तापर कंडीशन चेक करूछि तापर मु कंडीशन टा चेक करूछि राइट लेट्स चेक देखो एठी कोन कला 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बट एठी कंटिन्यू रो किछ काम रहिला कि कंटिन्यू रो किछ काम रहिला नै राइट बट मु जदी सही पर्टिकुलर ए एकोटा को मु कोन करछि एठू हटै दोछि प्रिंट कर देले एठी एठू हटै देली ओके लेट्स चेक इट देख लो 6 टा गायब हो गेला 6 अब देखेलानी काहे कि 6 देखेलानी 6 काहे देखेलानी ना द फर्स्ट कोन कोछि ना हमें a रो वैल्यू 0 नै जे फर्स्ट हमें a को इंक्रीमेंट कर दोछे एटी 1 हे गेला राइट a रो वैल्यू फर्स्ट अछि 0 0 चेक करना यस 0 लेस देन 10 एटी आसला एटी कोन कला ना 0 रो वैल्यू को इंक्रीमेंट करी 1 कर देला किंतु हमें +1 जेतु देइछे राइट अरिथमेटिक +1 देइछे तो से इंक्रीमेंट बाय 1 it incremented by 1 तो 1 equal to 6 condition not satisfied तापर प्रिंट कला 1 सेमती बॉडी बॉडी जेतबले 6 हे जाउची राइट एटी जेतबले 6 हे गला 6 आसी गला इक्वल टू 6 यस तापर कोन कला ना से कंटिन्यू माने से आउ तळु को आसलानी प्रिंट कलानी डायरेक्ट कंटिन्यू कला एटू लूप रू तो लूप रू फर्स्ट 6 लेस देन 10 यस एटी कोन करियो प्रिंट करियो 6 plus 1 7 एटी कंडीशन 7 equal to 6 नो satisfy हेलानी तापर प्रिंट करिवो राइट तो ए वे रे हमें ब्रेक स्टेटमेंट आउ कंटिन्यू स्टेटमेंट हमें यूज करि पाइ बट द मेन टाइम रे रियल टाइम रे हमें यदि देखिबा हमें कोठी ब्रेक यूज करिबा कोठी कंटिन्यू यूज करिबा राइट गोटे एग्जांपल देख देखिबा तमे धरो रियल टाइम रे गोटे किछि गोटे इश्यू फाइंड किछि एरर फाइंड करियर अछि धरो हमर गोटे एप्लीकेशन गोटे एप्लीकेशन रन होछि गोटे एप्लीकेशन लॉग फाइल अछि राइट से लॉग फाइल हमें गोटे किछि गोटे पैटर्न खोजुछे हमें गोटे किछि गोटे पैटर्न खोजुछे तो कोन होछि ना से पैटर्न ता जेतबे हमको मिली जिवो जेतबे हम से पैटर्न ता पाई जिवो देन हम स्टेटमेंट ता कोन करिया चाहिले ब्रेक करि परिबा जे हमें से पैटर्न पाई गले बोली तो आउ गोटे स्टेटमेंट सेम थिंग बट हमें चाहू छे जेते भी फाइल अछि से फाइल रो सबु जाको फाइल रो कंटिन्यू करिवो माने खोजिबो कंटिन्यू माने जेते बळे भी हमें से ब्रेक स्टेट जे कोन से स्टेटमेंट जो हमें खोजु छे जो फिल्टर पे जो पैटर्न ता खोजु छे से पैटर्न ता मिली गला राइट मिली गला पर से आउ गोटे फाइल चेक करिवो ता माने कोन करबो से फाइल रे आउ चेक करिवोनी आउ गोटे फाइल धरि के चेक करिवो सेठी हमें कंटिन्यू स्टेटमेंट लिखिबो तो बेसिकली तमे तो प्रोग्राम करूचो तमरो प्रोग्राम रो रिक्वायरमेंट कोन प्रोग्राम रो रिक्वायरमेंट एठी जेमति कि हमें ब्रेक रे देखिलु कोन ब्रेक डेमो रे देखले कोन ए पर्टिकुलर जदी वैल्यू 6 हे जाउची देन हमको एठी ब्रेक कर दोची आउ हमको जिबार नहीं आगु हमरो जहा दरकार थिला मते मिली गला तो मते आगु को जिबार नहीं बोले तो मटी ब्रेक दे देली
राइट तो आउ गोटे कौन हो कंटिन्यू रे कौन होची ना मते जहां मिलिबार थिल मिल बट मु आउ चाहूची खोजिबा पई मते गोटे जिंस मिली गला मु चाहूची आउ खोजिबा पई देन मु कोन कंटिन्यू कली तो सेठी कोन करबी कंटिन्यू यूज हो बुझी पारलो ये सिंती हम कंटिन्यू विषय देखिए तो ब्रेक विषय जान राइट तो कंटिन्यू the continue statement is similar to break command except that it causes the current iterations the loop to exit rather than entire loop माने जोटा कि ओके एटी आउ गोटे एग्जांपल अछि भलो एग्जांपल ता जोटा कि ऑड आउ इवन नंबर चेक करबा राइट ओके सिंपल प्रोग्राम ता हमें लिखि दबा vi continue ए पर्टिकुलर चेंज कर दो चाहे ओके तो एठी हमें कौन लिखिली मु कौन कली नॉर्म्स कौन एठी शुभश्री नॉर्म्स नॉर्म्स वाला वेरिएबल दिया है एटा वेरिएबल राइट तो एठी वेरिएबल रे मु कौन कली गोटे गोटे नंबर गोटे स्ट्रिंग हिसाब रे बा गोटे नंबर्स दे दैछु 1 2 3 4 5 6 राइट तो मैं एठी कौन करछि फॉर नॉर्म इन डॉलर नॉर्म्स रा हमर वैल्यू कोन अछि 1 2 3 4 5 6 आइदर तमे गोटे वेरिएबल नै करि परिबो किंबा एठी डायरेक्टली भी मु 1 2 3 4 5 6 7 दे परिबी राइट हमें लास्ट क्लास लूप रे देखितले फॉर लूप रे राइट तो एठी हमर कोन अछि आर वैल्यू नॉर्म्स रा वैल्यू अछि 1 2 3 4 5 6 तो हमर फॉर लूप आसीबो केतेटा 7 तर एग्जीक्यूट होबो लूप केतेटा हे गेला 7 तर एग्जीक्यूट होबो 7 तर फॉर नॉर्म हमें ठीक गोटे कोन आ गोटे वेरिएबल नै गेले जोटा कि नॉर्म यूज करिवो तो एठी हमें कोन गेले डू q equal to exp dollar norm माने एठी नॉर्म अछि कोन छी फर्स्ट नॉर्म हला 1 राइट 1 मॉड्यूलस 2 राइट कहीं हमें इवन आउ ऑड नंबर फाइंड करूचे राइट सो ऑड नंबर कौन इवन नंबर कौन जानी छो इवन नंबर व्हिच इज डिवाइडेड बाय 2 2 right इवन नंबर इज व्हिच इज हमें तो डिवाइड करिवा राइट ता रिमाइंडर ता सब बेले कोन 0 रहउतिबो then that is even number odd number which is not divisible by 2 simple that formula we are going to use it here तो हम एठी कोन कर q गोटे वेरिएबल नै गेले गोटे वेरिएबल रे हम कैलकुलेशंस पके देले जोटा कि नंबर एठू नबो से को डिवाइड करियो बाय 2 रे बाय मॉड्यूल बाहर करियो नॉट डिवाइड आर मॉड्यूलस बाहर करियो 2 रो मॉड्यूल रे रिमाइंडर बाहर करियो रिमाइंडर जेतिक रहइबो ता सहित कंपेयर करियो जदी रिमाइंडर 0 हे गेला then it is an even number then continue एठी कोन हमें कंटिन्यू दैछे जदा इवन नंबर पाइबो से कंटिन्यू करिवो जोटी से ऑड नंबर पाई जीवो सेठी कोन करिवो फाउंड ऑड नंबर इवन नंबर पाई गला ब्रेक कंटिन्यू करी पुनी आसिल पुनी चेक करिवो ऑड नंबर पई पुनी देखिलो फाइंड ऑड नंबर जे कोन गोटे नंबर पाई गला से कोन करिवो जदी फर्स्ट एटा कोन रिमाइंडर जदी 0 न होउची राइट कोन होबो से 8 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होबनी कंडीशन ट्रू हेले से एटा इवन होबो कंडीशन फॉल्स हे गेल व्हाट इज फाउंड ऑड नंबर फर्स्ट 1 आसिला 1 टा हमर आसीबो कोन ऑड नंबर आसिला 2 टा इवन आसीबो 3 टा ऑड आसीबो राइट इवन ऑड राइट लेट्स चेक फाउंड ऑड नंबर इज एन इवन नंबर बट एटा को मु आउट की बेटर वे रे केमती लिखिबा हम बुझी परिबो तो ये जो प्रोग्राम ता में कले राइट मु एठी लिखि दोची डायरेक्टली प्रिंट कर दोची इंस्टेड ऑफ नंबर मु एठी वेरिएबल ना दे दोची नॉर्म तो एठी नॉर्म कोन होबो जहा नॉर्म रो वैल्यू जहा थिबो एठी
एटा सिटी प्रिंट करिवो इज एन इवन नंबर राइट सेमती एठी भी लिखि दोछि डॉलर num is an odd number is an odd number clear let's check it out again एठी कोन आमे जणा पड़िन जस्ट फाउंड ऑड नंबर फाउंड इवन नंबर सब देखै देला बट मु एठी कोन कली से नंबर ता ही डिस्प्ले कर देली से नंबर ता से पर्टिकुलर डिगे फर्स्ट अछि 1 देखो सॉरी 1 is an odd number 2 is an even number 3 is an odd number 4 is an even number but completely 1 2 3 4 5 6 कोटा इवन कोटा ऑड से ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके हम डिस्प्ले कर देला राइट तो वही कंटिन्यू जगह रे मु जतबे चाहिबी जोठी से इवन नंबर पाइबो सेठी से ब्रेक करियो राइट जोठी से इवन नंबर पाइबो सेठी से सपोज ब्रेक करियो तो मु कोन करछि न एई पर्टिकुलर देखो आउ गोटे ब्रेक डेमो रे बनै कि माने डेमो गोटे करिवो तो ब्रेक स्टेटमेंट दबा तो कैन एनीबॉडी टेल मी हाउ टू कॉपी ए फाइल in Linux how to copy a file in Linux मु चाहूची ए फाइल टाकू कॉपी करबी आ गोटे डिफरेंट ना गोटे फाइल कॉपी करिक तार नाटा अलगा गोटे देबी तुम केमती कोन कमांड यूज करिवो cp ओके cpmv मु कोन अछि ना बर्तन फाइल ना कोन अछि फाइल ना अछि कंटिन्यू .sh मु फाइल टा कोन कहूची कॉपी करिकरी आकू मु चाहूची देबी ब्रेक डेमो 1.sh तुम कोन केमती कोन यूज करबी कोन कमांड आपको यूज करबी को कमांड mp command cp command okay cp then file name continue.sh then target जो फाइल नाटा देबी ब्रेक डेमो 1.sh ता माने कोन हला ना एठी cp command it will copy the entire file to a new file named as break demo the content of the continue.sh the entire content of the continue.sh will be copied to break demo 1.sh done हेगला देखो break demo 1.sh कॉपी हेगला तो मु आकू सपोज सबे मॉडिफाई करी break demo 1 sorry 1.sh ओके मु आकू मॉडिफाई करली तो मठी कोन करछि न किछि रैंडम नंबर नै जाउछि 1 2 3 4 5 6 न देगिरी किछि छोटे रैंडम नंबर नै जाउछि राइट सपोज मु नै गली 12 33 45 66 40 48 71 sorry 71 96 ओके मते भी वेरीफाई करियर अछि कोटा ऑड आउ कोटा इवन जदि मु एटी कर देबी कोन बस सब कंप्लीटली शो कर दो मते राइट लेट्स चेक इट शो कर दला 12 is an even number 33 is an odd number all this right तो मु चाहूची कोन एठी कोन हम कंटिन्यू यूज करछे राइट मु चाहूची कोन करियो ना जोठी मते इवेंट नंबर बा जोठी मते ऑड नंबर मिलिबो सेठी से कोन ब्रेक हे जिवो स्टेटमेंट माने हमर लूप ता ब्रेक हे जिवो ओके तो मु एठी कोन करछि आउ टिके बेटर वे रे करबा पहिले मु आकू डिलीट कर दोछि केवल इवन ओके राइट तो एठी कोन हला एठी मु कोन लिखिली ओके एठी मु कंटिन्यू देछि बट मु ठीक ब्रेक मारते ब्रेक तो एठी कोन हला तो फर्स्ट चेक करिवो जो इवेंट नंबर सॉरी
एटी ब्रेक नंबर न देकरी एटा सब इवेंट नंबर फर्स्ट स्टार्टिंग रो ही से ब्रेक हे जिवो राइट तो मु किछिटा ऑड नंबर दे दोची इवेंट नंबर न देकरी मु किछिटा ऑड नंबर दे दोची 61 43 48 हाँ ओके डन सेठी मध्ये एग्जीक्यूट करबी कोन हबो देखो से कोन कला ऑड नंबर देला 13 odd number 61 odd number 43 odd number 48 is an even number तो मोर क्वेश्चन कोन थला जोटी से इवन नंबर पाइबो सेठी से ब्रेक हबो जोटी से इवन नंबर पाइबो सेठी से ब्रेक हे जिवो तो 48 जेतोल इवन नंबर पाइलो से कंप्लीटली ब्रेक हे गेल राइट एठी कोन फर्स्ट कोन कल नाउ चेक कला 13 को 13 रिमाइंडर चेक कला modulus right the remainder check color the remainder 0 no condition not satisfied the print color is an odd number 61 is an odd number 43 is an odd number तर 48 जेतबे चेक करछि से 48 ର remainder 0 हो गेला condition satisfied then कोन करिवो it will print the number is an even number 48 is an even number कर सरी एठी कोन करछि तापर ब्रेक हे जाउछि ता माने से लूप को सेठी से स्टॉप कर दे तापर आउ जो रहिला 71 आउ 96 आको आउ से चेक करलानी कारण लूप आउ कंटिन्यू हेलानी ब्रेक हे गेला राइट एमती हमें ब्रेक आउ कंटिन्यू यूज करला आई होप you completely understood how break out continue works right let's move on to the other topic so today we'll discuss about the other topic which is cell function कौन right basically what is a function जे कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तमे यूज करूछ बा जानी छबी सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रे हमें फंक्शन यूज करू बा मेथड यूज करू राइट तो ଗୋଟେ फंक्शन काम होची कोन कोड को रीयूज करिवा पाए माने जे कोड ता हमें लिखी जे ताको हमें केमथि रीयूज करि पाइबा multiple times we can reuse it we can use it right so a function is a reusable block of code that performs a specific task suppose मते गोटे फंक्शंस बनेवार अछि एज कैलकुलेटर बनेवार अछि एज कैलकुलेटर बनेवार अछि तो एज कैलकुलेटर रे कोन हो हमें डेट ऑफ बर्थ दबा से कोन करबो हमर एज कैलकुलेट करिवो राइट आम खाली डेट ऑफ बर्थ दबा एज कैलकुलेट करबा सपोज आम पाखे तुमको बतौछि फंक्शंस हमें कोठी केतबळे यूज करबा ओके फंक्शंस हमें कोठी आ केतबळे यूज करबा सपोज जेमति कहली गोटे एज कैलकुलेटर हमें बनेले सो एज कैलकुलेटर जो हम बनौछे हमें कोन करबा सपोज 5 जण पिला अछन रंजित राकेश सपोज रोहित सपोज 3 जण पिला अछन म 3 जण का एज कैलकुलेट करबी राइट आर गुड डेट ऑफ बर्थ आर गुड डेट ऑफ बर्थ आर गुड डेट ऑफ बर्थ तो म 3 जण का एज जेतले कैलकुलेट करूची तो म कोन करबी 3 जण को जदी फंक्शन यूज न करूची कोन हबो 3 जण का पई सेपरेट कोड लिखिबी तो लिखले माने कोन हबो सेम कोड को हम कोन करबी again and again लिखियो पड़ियो मते राइट रंजित रो डेट ऑफ एज बा कैलकुलेट करिया पे राकेश रो एज कैलकुलेट करिया पे रोहित रो एज कैलकुलेट करिया पे मते सेम कोड again and again लिखियो पड़ियो तो सेटे हला कोन हमें बहुत टाइम कंज्यूम करिवो एक्सेस लाइन ऑफ कोड हे जिवो जोटा कि एक्चुअली इट्स नॉट ए गुड वे ऑफ कोडिंग ता पे कोन करिया हमें गोटे instead of that we'll use function the function कौन है जी गोटे ब्लॉक ऑफ कोड हमें जो यूज करबा एठी ब्लॉक ऑफ कोड लिखि दबा माने जो कैलकुलेट करबा एज कैलकुलेटर हमरे कंप्लीट एज को हमें एठी कैलकुलेट कर दबा गोटे फंक्शन रे कैलकुलेट करिकि सेही गोटे जो फंक्शंस हमें लिखिले सेही फंक्शन को
ए फंक्शन रे हमें सपोज डीओबी डेट ऑफ बर्थ पास कर देले, राइट। तो हमें रंजित रो डीओबी पास कले तो से कौन करिवो आर एज बाहर कर देला। सेमती राकेश पे हमें कौन करिवा से फंक्शंस कॉल करिवा तार भी डीओबी पास कर देले तार भी एज कैलकुलेट कर देला, राइट। एमती हमें कौन करबा ना ए गुट्टे फंक्शंस हमें लिखिबा सेम फंक्शंस कैन बी रीयूज्ड मल्टीपल टाइम्स। हमको और अधिका कोड लिखिबा को पड़िबन, छोटो अल्प कोड को सही गोटे कोड को हमें बारंबार यूज कर पारी। दैट्स व्हाई फंक्शंस बीइंग यूज्ड फॉर रीयूजिंग द कोड अगेन एंड अगेन। ओके, सो फंक्शन गोटे कोन ए ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स ए स्पेसिफिक टास्क। तो बेसिकली फंक्शन भीतर रोही कोन ना जो भी टास्क हम एग्जीक्यूट करे तार कंप्लीट प्रोग्राम टा लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टास्क आउ प्रोग्राम टा आई भीतर रही से प्रोग्राम टा में एग्जीक्यूट करे, राइट। तो डिफरेंट वे फंक्शंस केमती तार सिंटैक्स ता हमें यूज करिया जेतले फंक्शंस हमें यूज करूछे सेल्स फंक्शन रो बहुत इजी वे रे हमें ता यूज कर परिबो। सपोज मोटे फंक्शंस क्रिएट कली काल एज कैलकुलेटर जोटा हमें एग्जांपल दोउतली तो फंक्शन डेफिनेशंस बा सिंटैक्स ता कोन तो सिंटैक्स ता हमें केमती यूज करिबा सिंटैक्स हैला सपोज मु गोटे फंक्शन ना देली एज अंडरस्कोर कैलकुलेटर parenthesis देला, राइट। तापरे within the curly braces we have to write the code, within the curly braces we have to write the code माने जो कोड लिखो एटा लिस्ट ऑफ कमेंट्स तम हिसाब रे कैलकुलेशंस, राइट। कैलकुलेशंस रहिला ई कैलकुलेशंस हमें कोन हमर फंक्शन नाटा कोन हैला फंक्शन ना हैला एज कैलकुलेटर। तो हमें कोन करबा ई फंक्शन को कॉल कमती करबा ए कोड को ए जो पीस ऑफ कोड लिखिल ए पीस ऑफ कोड को हमें एग्जीक्यूट करके करबा ना हमें जदी केवल एज फंक्शन नाटा लिखि दबा एज कैलकुलेटर हमर कोन होबा ए पीस ऑफ कोड टा एग्जीक्यूट हे जिवो ए पीस ऑफ कोड टा एग्जीक्यूट हे जिवो। तो केमती होबो देखो मोटे नेगल फंक्शन demo.sh ओके। तो मुठी कोन करछि गोटे फंक्शंस देली सेमती हमर एज कैलकुलेटर सपोज एज अंडरस्कोर कैलकुलेटर, ओके देली, राइट। तो ए जो फंक्शंस ता हम कली सिंपली गोटे दउछि सपोज फर्स्ट लिखिली echo enter dob enter dob, ओके रीड एंटर dob मागला डेट ऑफ मागला पर हमर डेट ऑफ हिसाब रे कैलकुलेट करिवो, ओके। तो रियल कैलकुलेटर डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेटर तो बहुत प्रोग्राम लिखिबो पड़िबो एक्जेक्टली तो से फार्मूला टा हमको एठी लिखिबो पड़िबो। तो हम सेटा एक्जेक्टली फार्मूला न लिखिकरी एठी नॉर्मल जस्ट सिंपल गोटे कैलकुलेशंस कर दोची डेट ऑफ बर्थ हिसाब रे। तो हमर तो सपोज डेट ऑफ बर्थ न करिकरी मु दे दोची खाली एंटर डेट ऑफ ईयर टा डेट ऑफ बर्थ ईयर डेट ऑफ बर्थ ईयर, ओके डेट ऑफ बर्थ ईयर टा दे दोचे बर्थ ईयर को हमें माइनस करिकरी जस्ट एज सिंपल हमें यूज कर दोचे हला रीड कले। तो मु एठी कोन करछि एक्जेक्टली कैलकुलेट न करिकरी सिंपली मु लिखि दोछि एटा को इको प्रिंट कर दोछि इको data maguchi got a name of date of birth, date of year enter name, okay तापर कोन कले read
name okay GOVY date of birth year okay so name ଆଉ date of birth year ଦିଟା variable ମତେ ଏଠି ଆଣିଲି ମୁଁ right ଦେଖ suppose ମୁଁ ଆକୁ ପୁଣି ଯୋଉ variable ନେଇଛି ତାକୁ print କରିବି right dollar name dollar name info ଗୋଟେ particular କଣ functions ମୁଁ ଲେଖିଲି ଏ functions ଟା ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ function define କରିଦେଲି declare କରିଦେଲି functions define ସାରିଲା ପରେ functions କୁ ମୁଁ suppose execute କରିବି କେମିତି କଣ execute କରାହବ functions କୁ ଆମେ execute କରିବା direct age underscore calculator ଆଉ କିଛି ତମେ ଦବନି simply age calculator ଯଦି ଲେଖିଦେଲ କଣ ହବ ଏଇ function ଟା ଆମର call ହେଇଯିବ এই functions ଟା ଆମର call ହେଇଯିବ এই function ଟା ଯେତେବେଳେ call ହବ ତା ଭିତରେ ଯାହା ବି command ଆମେ ଦେଇଛେ ସେ command ସବୁ execute ହବ right ସେ command ସବୁ execute haba then what we'll do let's execute this command enter name so first name magla right name suppose dali Ranjit tapare birth year magla birth year suppose dali 2024 so my name is Ranjit I born in 2024 simple right so eta ମୁଁ କଣ କଲି ସେଇ ଯୋଉ functions ଟା ଲେଖିଲି ସେ functions ଭିତରେ ହିଁ ମୁଁ directly input ମାଗୁଛି ଆଉ execute କରୁଛି right ତ ଏଠି ଆମେ ଚାହିଁଲେ କଣ କରିବା ଆମର command line argument use କରିପାରିବା positional parameter use କରିପାରିବା କିଏ ବତେଇ ପାରିବ କୋଉଠି ଆମେ positional parameter use କରିପାରିବା okay positional parameter ଆମେ ଯଦି function ରେ pass କରିବା ଯଦି ଆମେ function रे pass करिबा कि मु $1 पास कली $2 पास कली दीटा को पास कली $1 $2 तो ये $1 $2 को मु सपोज चाहूची ये लाइन दीटा हटे दोचे my name is $1 $2 केमते एटा एग्जीक्यूट होबो जदि एठी पास करली तो एठी मु जहा ना भी चाहिबी पास कर पारिबी देखो माय नेम इज राकेश तो एठी कोन हला हमें गोटे मेथड यूज कले बा गोटे फंक्शंस यूज कले कोडा एज कैलकुलेटर सिंपली गोटे ना दे दीची फंक्शंस में तमे जहां भी ना दे परियो मु सपोज फंक्शन ना भी दे दोची सपोज फंक्शन डेमो फंक्शन अंडरस्कोर डेमो ओके एठी से हिसाब रे हमें फंक्शन सा कॉल करिया पे फंक्शन डेमो सही नाटा ही कॉल करिया ताई फंक्शन अंडरस्कोर डेमो फंक्शन अंडरस्कोर डेमो तो हमर कोन हला ए पर्टिकुलर जो एग्जीक्यूट हबो प्रिंट कला माय नेम इज राकेश 2024 जावा में यूज करिया देन हमें ठीक है एठी कोन हला हमें फंक्शंस रे पैरामीटराइज्ड फंक्शंस बाय द क्वेरी पैरामीटर पास कले पोजिशनल पैरामीटर हमें एठी पास कर दे पोजिशनल पैरामीटर हमें तो पास करछे एठी जहा भी पोजीशन जहा भी हमें कमांड लाइन रे
दउचे सेटा कोन एठी नै तो फंक्शंस विषय जानि पाइलो गाइस केमती फंक्शंस हमें यूज करिवा राइट नाउ okay function syntax विषय जानि गेलो राइट okay now let's see arrays आज क्लास रे सारी दवा कंप्लीटली जोटा कि हमें देखले लूप कंट्रोल देखले सेल फंक्शंस देखले और सेल आरए विषय जान दवा राइट तापर हमें गोटे नेक्स्ट क्लास रे जोटा कि हमर कंप्लीट मे बी टुमारो क्लासेस रे हमें गोटे प्रोग्राम गोटे दुईटा बड़ बड़ प्रोग्राम करबा सेही प्रोग्राम रे प्राय चेष्टा करबा सब जाक ऐड करबा पई ओके सब जाक ऐड करबा पई तुमको गोटे टास्क भी एबे दे दउची जोटा कि हमर एज कैलकुलेटर जोटा मु देखुतली जोटा मु खाली से सिंपल एज कैलकुलेटर नाटा देली बट हमें नॉर्मल वे रे जस्ट गोटे प्रिंट कली गोटे फंक्शन रो राइट बट तमर गोटे टास्क हैला क्रिएट a program by shell script to calculate the age of a student okay age of a person calculate write a shell script to write a shell script to calculate the age of a person okay age of a person okay write a shell script to calculate the age of a person by passing the date of birth as an argument बुझी पाइलो माने डेट ऑफ बर्थ हमें गोटे आर्गुमेंट पास करिया ता माने कोन हला हमें गोटे डेट ऑफ एज कैलकुलेटर मेथड यूज करिवो एज कैलकुलेटर फंक्शंस यूज करिवा जोटी हमर डेट ऑफ बर्थ पास करले सेठी से तार ए जो कमांड लाइन आर्गुमेंट गोटे हमें पास करिवा सेटा से कोन ए फंक्शंस एक्सेप्ट करिवो एक्सेप्ट करके से तार कैलकुलेट करके तार रियल एज केते से शो करिवो ओके एटा हला तम पई टास्क ओके राइट ए शेल स्क्रिप्ट टू कैलकुलेट द एज ऑफ ए पर्सन बाय पासिंग द dob एज अ आर्गुमेंट तुम इंटरनेट रो हेल्प नहीं पारिबो बट डोंट यूज चैट जीपीटी सेठी कोन तुमको कंप्लीटली कोड मिल जिवो बट दैट इज वेस्ट ऑफ योर टेस्टिंग द स्किल राइट तुम स्किल टे टेस्ट करि परिबोनी राइट तुम कोन सिकिछ कोन जानछ तमर वे द लॉजिक तमर थॉट प्रोसेस ता तुम टेस्ट करि परिबोनी कारण तुमको ऑलरेडी रेडीमेड मिल जिवो तुम आनी कॉपी पेस्ट करि रन कर दबो तुम खाली इंटरनेट यूज करियो बट केमती एज कैलकुलेट करा हुई राइट एज कैलकुलेटर फॉर्मूला जेमति कि मु गोटे एग्जांपल एबे दउची एज कैलकुलेटर फॉर्मूला एज कैलकुलेट फॉर्मूला ओके एज इन लेटर ईयर फॉर्मूला डाइट कंप्लीटली अछि तमे आकु फॉलो करिकरी ता हिसाब तमे केमती फॉर्मूला तमे पकेबो तमे प्रोग्राम रे सेल स्क्रिप्टिंग रे मैथमेटिक्स कैलकुलेशन रे सही हिसाब रे कोन हमें डेट ऑफ बर्थ नै गेले डेट ऑफ बर्थ हिसाब रे तमर कैलकुलेट करिवो राइट तो जान छटा टिके कॉम्प्लिकेटेड हबो बट डोंट वरी हमें नेक्स्ट क्लास रे कंप्लीटली मूवी कैप्चर कर देम तुमको कंप्लीटली बुझाई देबी केमती डेट ऑफ बर्थ तो डेट ऑफ बर्थ माने हमें डेट ऑफ हमें मु कोन तुम एग्जांपल देतली डेट ऑफ बर्थ ईयर देतली 2024 2019 जा भी देतले बट हमें कोन ना कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ नबा सपोज जनकर बर्थडे होची 15 जून 1995 सपोज तो 1995 15 जून रो आज का डेट रे तार डेट ऑफ बर्थ रे केते कंप्लीट से शो करिवो ओके तापे हमें स्क्रिप्ट तमे आज ये करो तापे नेक्स्ट क्लास रे मु स्क्रिप्ट तुमको कंप्लीटली बतई देबी तार
कंप्लीट फॉर्मूला आनिकी तब बतई हम लिखिकी कंप्लीट जानिबा केमती एटा काम करूची राइट ठीक है तो नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू द सेल आरए तो सेल आरएस कौन सेल फंक्शंस विषय आनले तो सेल रो भी किछिटा बिल्ट इन फंक्शंस रहउची तो बिल्ट इन फंक्शंस विषय हम जानिबा अल्प किछि रहउची फंक्शंस जोटा भी हमें यूज करि पारिबी ओके तो सेल आरए कोन arrays provide a method of grouping a set of variables तो जेकोसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखुचे सबुतरे हमें array concept ता पाइबा हमें जो वेरिएबल वर्तमान क्रिएट करथले प्रीवियसली हम जो वेरिएबल क्रिएट करलो वेरिएबल रे कोन गोटिए वैल्यू हमें असाइन करथले वी वर असाइनिंग ओनली वन सिंगल वैल्यू गोटे वेरिएबल रे गोटे वैल्यू रहतला बट array होची कोन से टाइप ऑफ ए वेरिएबल right which holds a group of values okay array provide a method of grouping a set of variables instead of creating a new name for each variable that is required you can use a single array variable that stores all other variables by values okay there are two types of arrays तो माने देखो हमें कौन करिबा हमें गुटे वेरिएबल जो तो यूज करूथले वेरिएबल हम तो यूज करथले कोन होतला ना गोटे वेरिएबल सपोज मु गोटे नै गली नेम नेम गोटे वेरिएबल नेली एठी गोटिए वैल्यू सपोज रंजित दे देली तो एठी वर्तमान नेम कोन हला केवल सिंगल वैल्यू होल्ड करिछि मु चाहूछि मल्टीपल वैल्यू होल्ड करिया पई तो कोन करबी सेमती नेम नै गली इक्वल टू मु कोन कली ताकोटे array विषय ताको असाइन कर देबी सपोज रंजित स्पेस राकेश स्पेस रोहित स्पेस रमेश ओके एडी कोन हला नेम गोटे array हे गेला जे कि होल्ड करछि मल्टीपल वैल्यूज तो ये जो वैल्यू को कौन करी गोटे ना रे केमती सब वैल्यू को मु एक्सेस करि परिबी जेमती गोटे ना रे सब वैल्यू को मु एक्सेस करि परिबी सेमती array starts with index 0 r of index हला 0 r index हला 1 r हला 2 r हला 3 तो वर्तमान मते रंजित प्रिंट करियार अछि तो मते कोन करियार अछि नेम स्क्वायर ब्रैकेट भीतर 0 रखिली ता माने से कोन करिवो एटा प्रिंट करिवो रंजित से हिसाब रे जदी नेम 1 दे देली तो प्रिंट कला राकेश तो एठी कोन हलो वेरिएबल नेम गोटिए बट वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट प्रिंट करछि बेस्ड ऑन द इंडेक्स array रे यूज एटा ओके array हला देयर आर टू टाइप्स ऑफ arrays गोटेला एसोसिएटिव array आ गोटेला इंडेक्स्ड array जोटा कि सेल प्रोग्रामिंग रे कथा हम करछु अलगा प्रोग्रामिंग रे डिफरेंट वे रे अछि हम सेल प्रोग्राम विषय जानछे एसोसिएटिव array आ गोटेला इंडेक्स्ड arrays तो एसोसिएटिव arrays कोन हला इट स्टोर्स द एलिमेंट्स इन की वैल्यू पेयर माने की आ गोटे वैल्यू राइट तो की नॉर्मल है तो वेरिएबल नेम जोटा कि हम कोटेटा की जोटा वैल्यू हमें असाइन करछेटा वैल्यू रहउची की वैल्यू पेयर इंडेक्स्ड array ला स्टोर एलिमेंट्स विथ एन इंडेक्स स्टार्टिंग पॉइंट तो एटा हमर कोन है जो इंडेक्स स्टार्टिंग पॉइंट 0 तो एटा हमर हे गेला इंडेक्स्ड array एटा गेला इंडेक्स्ड array राइट तो हमर दुईटा array रहउची जेमति कि वन हला associative array आ गोटेला indexed array ओके तो associative array कोन होछि ना एटा रहउछि की वैल्यू पेयर माने हमें धरो मु कहली एठी कोन सपोज नेम गोटे वेरिएबल नै छी जो एग्जांपल ता हमें दउथले एसोसिएटिव array रे नेम नै गली नेम 0 मु एठी असाइन कर देली रंजित तापर आ गोटे कोन नै गली सपोज नेम 1 इक्वल टू
राकेश तेटी कौन है की वैल्यू पेयर एटा है की अब एटा है वैल्यू की वैल्यू राइट की है नेम वेरिएबल 1 और रंजीत तेटी कौन है हमर एसोसिएटिव आरे तुम गोटे 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 करिके करिवो बट इंडेक्स्ड आरे रे कौन होची गोटे वेरिएबल ना तमे नै गल नेम और सेठी हमें मल्टीपल वैल्यू को असाइन कर देले मल्टीपल वैल्यू को असाइन कर देले ताको हम एक्सेस करिया पे तो इंडेक्स हिसाब रे इटाला 0 1 2 मन रखि दो आरे रे लाइनक्स रे आरे स्टार्ट्स होची इंडेक्स वैल्यू होची फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू होची 0 मु जदी नेम और इंडेक्स ता दे देली 0 देन द फर्स्ट इंडेक्स होची वैल्यू रंजीत देन रंजीत प्रिंट करिवो बुझि पालो इंडेक्स आरे रो सम छोटो एग्जांपल एठी गोटे दे दिछि arrays रो इंडेक्स आरे आ गोटेला हमरो एसोसिएटिव आरे इंडेक्स आरे और एसोसिएटिव आरे तो मु एठी कोन करछि ए जो आरे हमें क्रिएट कले लेट्स सी एन एग्जांपल ओके आरे डेमो हमें देख दो ओके मु से नेम एग्जांपल ही नहीं जाउछि नेम जेमति कि हम यूज करतले 0 इक्वल टू रंजित सेमति आउट ने गली नेम 1 इक्वल टू राकेश देन तो एटा को हमें जदी प्रिंट करिया कोन हबो केमति प्रिंट करिया देखो नॉर्मल वे रे हम जदी प्रिंट करिया डायरेक्टली वैल्यू राइट डॉलर डॉलर नेम 0 सेमति देखो डॉलर नेम 1 तमने थी हमें जो ना गोटे वेरिएबल ना कोन गोटे नेम बट with the associative array with the associative array what we did we gave with the index number and it separately we assigned with 0 हमें assigned कले value रंजीत 1 को assigned कले राकेश तो ऐसे हिसाब में जदी प्रिंट करिवो एटा हमर डिस्प्ले करिवो कोन राइट रंजीत 0 1 बट एटी हमर प्रिंट कर देला बट द वैल्यू प्रिंट कलानी के कहबो काहे की वैल्यू प्रिंट कलानी वैल्यू काहे की पूर्वरु डॉलर ते कोन कहलो माने नेम जो 0 पूर्वरु डॉलर दे हबो छ ना ना डिफरेंट वे रे काहे की एटा हलन मु आउर सब्स्टिट्यूशन रे बुझैतली राइट एटा डायरेक्टली स्ट्रिंग को नहीं गला राइट जेतु डबल कोट देछि डायरेक्ट स्ट्रिंग नहीं गला हम एटी स्पेशल लाइन लिख दे हमें कोन ब्रैकेट दे देछि एटी राइट स्क्वायर ब्रैकेट तो सेटा को आउ से कोन गला जो वेरिएबल नेम टा को से कोन सब्स्टिट्यूट करि पारुनी जेतु सब्स्टिट्यूट करि पारुनी डायरेक्ट जा स्ट्रिंग अछि सेटा को ही से प्रिंट कर दोछि ताको हमें सब्स्टिट्यूट करबा भेला हम कोन करिया पड़िबो within the curly braces we have to write the thing right within the curly braces we have to write the see curly braces भितर हमको जेतु हमें बड़े इंडेक्स देखो एंड कोन होला डॉलर कर्ली ब्रेसेस नेम देले कर्ली ब्रेसेस एंड तो बर्तमान हमें सब्स्टिट्यूट करछे उबेरे प्रिंट करबा सी रंजीत आउ राकेश तो दीटा का वैल्यू प्रिंट कला तो हमें जतले आरे लिखुचे जा भी की वैल्यू पेयर लिखिचे टी की हला नेम 0 रंजीत नेम 1 हला राकेश
तार की आमे जतले सब्स्टिट्यूट करके द वैल्यू को एक्सेस करिया बेले आमे विद इन द कर्ली ब्रेसेस यू हैव टू राइट इट विद इन द कर्ली ब्रेसेस. Now let's go ahead and check about the indexed array. Indexed array. এটা আমরা দেখলে associative array. Associative array. তারপরটা আমরা দেখলে indexed array, right? তো indexed array রে আমি দেখলে গোটে কোন কলিম নেই গলি name equal to নেই গলি তো এটি কোন করিব within the bracket, within the parenthesis, right? Not bracket, within the parenthesis we have to write the value, right? Suppose मैं देली Ramesh, Rohit, Rajesh. ओके तो मैं तो एटा प्रिंट करियार अछि, राइट? मु कोन करबी जदी एठी एको सेम केस रे प्रिंट करबी कोन डॉलर नेम 0 एटा को कॉपी पेस्ट कर दोची चेंज कर देली इंडेक्स टा, राइट? इंडेक्स चेंज कर दोची मु एठी कोन कली 0 जगह रे 1 दे देली, एठी 0 जगह रे 2 दे देली. एठी कोन हमें तीनटा वैल्यू अछि इंडेक्स टा रे. एठी हमरो कोन हला फर्स्ट इंडेक्स रे हमरो कोन अछि रमेश अछि, सेकंड रे रोहित अछि, थर्ड रे राजेश अछि. तो हमें कोन करियो एठी मु फर्स्ट इंडेक्स प्रिंट करया पई चाहूची रमेश, सेकंड वन, राइट? नाउ लेट्स check it. See Ramesh, Rohit, Rajesh print कला. तो बेसिकली मैं सब प्रिंट ना करी किसी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हिसाब रे केवल फर्स्ट इंडेक्स रे कोन अछि मु जदी चेक करबी देन कोन हबो फर्स्ट इंडेक्स रे रोहित अछि. ओके तो एंती हमें ई हिसाब रे हमें आरे यूज करियो. ओके ये जो आरे हमें यूज कले, राइट? तो एठी ए इंडेक्स आरे रे मु सपोज गोटे फॉर लूप लिखिबी गोटे कंटिन्यू फॉर लूप लिखिबी जोटी रोहित मिलिबो सेठी कोन ब्रेक हे जिवो माने आउ से खोजिबनी मते रोहित को फाइंड करिया अछि. धर 50 टा ना अछि, 50 टा ना भितरु जोटी रोहित आसिला तो एग्जैक्ट नेम सपोज मु देली रोहित कुमार. यदि रोहित कुमार आसिला देन the search is end, right? Search will be end and it will print Rohit's name and it will break. 8 tasks तो तमे करिवो. ओके एटा मु टास्क तुमको दे दोछि कोन करिवो आ गोटे टास्क राइट सेल स्क्रिप्ट टू display with particular name, display a particular name using loop control. Using loop control. Write a subscript to display a particular name using loop control. After the name is found, the loop should break. Okay, after the name is found, the loop should break. ये particular दुईटा टास्क तुमको देली. ओके एटा ट्राई करिवो नले हमें नेक्स्ट क्लास रे हम एटा ए दुईटा को करिवा. ठीक अछि.
दुईटा को लिखि दिया नले जस्ट फोटो गोटे नहीं जाओ करिके मतलब नेक्स्ट क्लास में रेडी थिबो नेक्स्ट क्लास में टेक करबे ओके दैट्स ऑल गाइस फॉर टुडेस क्लास नेक्स्ट क्लास हमें काली नेक्स्ट क्लास रे हमें कोन जो प्रोग्राम टा करिबा तापरे हमें डेवऑप्स को मूव करिबा